Hello students, welcome again in our today's science class. Okay, so as we have started our chapter 2, that is periodic classification of elements. So let's revise what we have learned in our last class. Okay, so what we have learned, that is we have learned about Dobereiner's triads. What is that? So here in this basically what happens, Dobereiner he made a group of 3 elements each having similar chemical properties and called them triads. तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट का जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है और उन्होंने उनको क्या नाम दिया, ट्राइड्स. ठीक है, यस. देन ही अरेंज्ड द 3 एलिमेंट्स in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. तो ये हम लोगों ने डिटेल में देखा है लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में. दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग दिस मीन व्हाट वी डिड, हम लोगों ने एक एलिमेंट को ए नाम दिया, दूसरे को बी दिया एंड थर्ड को सी नाम दिया. तो हम लोगों ने इसके बाद क्या किया, ए प्लस सी किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो हम लोगों को आंसर किसका मिला, बी का. दैट मीन्स the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. Okay, so this we have learned in Dobereiner's triads. Okay, then we have learned a very interesting topic, that is Newland's law of octaves. Okay, so what is that? He found that the every 8 element had some properties which are similar to those of the first. Okay, तो उन्होंने क्या बताया, जो 8 एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है किससे, फर्स्ट एलिमेंट से. यस, and he called the similarity observed in 8 and the first element as the law of octaves. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा इन आवर लास्ट वीडियो, दैट इज मैग्नीशियम शोज सिमिलैरिटी विथ बेरिलियम एंड क्लोरीन शोज सिमिलैरिटी विथ फ्लोरीन. Okay, so here in this chapter, in our last video, we have seen about the limitations which are found in Newland octaves. Okay, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा, Dobereiner's triads, then Newland's law of octaves, and then the limitations of Newland octaves. Okay, so today we are going to learn a very interesting topic, that is Mendeleev's periodic table. Okay, yes. So, the Russian scientist Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements during the period of, that is 1869 to 1872. तो उन्होंने ये periodic table कब डिस्कवर किया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 to 1872. Yes. Okay. So then what he discovered, let's see. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of element. तो उनका जो periodic table था वो एक बहुत important step था in the classification of elements. So Mendeleev considered the fundamental property of elements like atomic mass as standard and arranged 63 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. तो उन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स को अरेंज्ड किया अकॉर्डिंग टू एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ओके, देन ही ट्रांसफॉर्म्ड दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट. तो उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास को ध्यान में नहीं रखा, तो एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा और उनको एंड द एलिमेंट को उन्होंने कहाँ पर प्लेस्ड किया, पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या ध्यान में रखा, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यस, सो Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical properties of the element, जैसे कि मैंने बताया. ओके, देन these were the molecular formulae of hydrides and oxides of the elements, melting point, boiling points and the densities of the elements and their hydrides and oxides. ठीक है, तो उन्होंने
उन्होंने क्या किया, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट जो है उनको क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब जो है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है किसके, एलिमेंट की। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या किया, एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया। ओके, so Mendeleev found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval। तो उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो एलिमेंट थे उनके, जो एलिमेंट थे जिनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, वो रिपीट हो रहे हैं आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल। जैसे कि हम लोगों ने ऑक्टेव में देखा था, यस, every eighth element has a similar property to one first of the element, yes, something like that। The Mendeleev found that the elements with similar properties, that is chemical and physical properties, जो repeat हो रहे हैं after a definite interval। Okay, so on the basis of this finding Mendeleev ने क्या किया, एक periodic table discovered किया। Okay, then the properties of elements are periodic function of their atomic mass। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, सो हियर इज द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस, सो द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो जैसे कि आप लोग आप देखोगे, दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 टू ग्रुप 8। तो ये जो वर्टिकल कॉलम है उनको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप्स, वाइल द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है 1 2 3 जैसे ऐसे लिखा है, वो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे हम, पीरियड्स। ठीक है, एंड हियर इन दिस मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल यहाँ पे क्या है, एलिमेंट को जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस प्लेस किया है। जैसे कि आप देखोगे लिथियम का 7, फिर बेरिलियम का 9.4, तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अनुसार उनको ये पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड किया है। किसने, मेंडेलीव ने। यस, सो there are some merits of Mendeleev's periodic table। You all know that the science is very progressive. Yes, there is a freedom in the science to revise the old inference by using more advanced means and methods of doing experiment. Yes, so these characteristics of science are clearly seen in the Mendeleev's periodic table। Okay, so while applying the law that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses to all the known element, Mendeleev ने क्या किया, Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available till then was not final but it could change। तो उन्होंने क्या थिंकिंग किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनल नहीं है, वो चेंज भी हो सकती है। जैसे कि साइंस में आपको पता होगा कि रोज़ न्यू डिस्कवरी होते हैं, तो न्यू कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। येस, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल डेमोन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग मेरिट्स। Before going to the merits, if your textbook is there in your hand, then you can see in the page number of 18, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 लाइन दिया है, दैट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड शोन एज R2O3 इन द अपर पार्ट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आर रिटन एज R2O। तो 2 जो है वो अपर केस में था तो उनको लोअर केस में दिया है, एंड R2O3 को भी इन द प्रेजेंट सिस्टम। ओके, तो ऐसे एक टेक्स्ट बुक में दिया है, वो ध्यान में रखो। यस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स मेंडेलीव्स मेरिट्स। मेरिट मतलब क्या अच्छा हुआ जब उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दिया। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट वर रिवाइज्ड and so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties। तो एटॉमिक मासेस जो है वो कुछ एलिमेंट्स के रिवाइज्ड हो गए। ओके, एंड उनको क्या मिला, इनको प्रॉपर प्लेस मिला पीरियोडिक टेबल में विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज़। तो कोई एलिमेंट था, कुछ एलिमेंट थे जिनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला था, तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, उनको प्रॉपर प्लेस दिया। Yes, for example, the previously determined atomic mass of beryllium is 14.09 was changed to the correct value, that is 9.4, and beryllium was placed before boron। तो
जब पहले का एटॉमिक मास था बेरिलियम का वो कितना था 14.09, तो वो चेंज हो गया करेक्ट वैल्यू में, दैट इज 9.4 में, एंड बेरिलियम को बोरॉन के पहले की जगह मिली इन द पीरियोडिक टेबल. Yes, so this is the plus point. Then the second is Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंडेलीव ने कितना दूर का सोचा था कि उन्होंने वैकेंट प्लेस भी रखा अपने पीरियोडिक टेबल में, ताकि जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड हो जाएंगे उनको अच्छा प्लेस मिले. ठीक है. यस. सो three of these unknown elements were given the names, that is Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon from the known neighbors, and their atomic masses were indicated as 44, 68 and 72. Okay, later on these elements were discovered and named as scandium, that is Sc, then gallium, that is Ga, and germanium, that is Ge respectively. Okay. Yes, the properties of these elements matched well with those predicted by the Mendeleev. तो इनके जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छी तरह से मैच हो गए जैसे कि मेंडेलीव ने सोचा था. तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया किसमें, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में. तो आप यहाँ पे एक बॉक्स में आप देखोगे दैट इज एका एल्यूमिनियम जो कि गैलियम था, उसका एक्चुअल मास दिया है, डेंसिटी दिया है. सो यू कैन सी द सिमिलैरिटी बिटवीन देम. पहले कितना था 68 एंड कितना हो गया 69.7, मतलब कुछ सिमिलैरिटी है उसमें. येस. सो यहाँ पे क्या था डेंसिटी 5.9, तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटी शो हो रही है, दैट इज 5.94. सो लाइक दिस you can see the similarity between them. Okay. Yes, so this is the plus point in the Mendeleev's periodic table. Then the third point is there was no place reserved for noble gases in Mendeleev's ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. तो मेंडेलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैसेस के लिए कुछ रिजर्व प्लेस नहीं था. ओके. हाउएवर, when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev created zero group without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted very well. तो उन्होंने कितना अच्छा किया, देखो उन्होंने एक जीरो ग्रुप क्रिएट किया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, बस एक जीरो ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया जिसमें वो क्या कर सके, नोबल गैसेस जो है उनको अच्छी तरह से प्लेस कर सके. ओके. तो उन्होंने नोबल गैसेस के बारे में भी बहुत सोचा एंड उनके लिए भी वैकेंट स्पेस रखा. यस. Then these are the merits of Mendeleev's periodic table, but there are some demerits also. What is that? Let's see. The whole number atomic mass of the elements cobalt and nickel is the same. Okay. So therefore there was an ambiguity regarding to their sequence in the Mendeleev's periodic table. तो जो होल नंबर एटॉमिक मास था किसका, कोबाल्ट का एंड निकेल का, वो सेम था. तो उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्लेस करें, इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में. ठीक है. यस. देन द आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल. जो आइसोटोप थे वो डिस्कवर्ड हो गए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेंडेलीव पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल. तो क्या हो गया, एज आइसोटोप हैव सम same chemical properties but different atomic masses, you all know that. The challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. तो आइसोटोप जो है वो बाद में डिस्कवर्ड हो गए, सो दैट्स वाई मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया कि ये इनको कहाँ पे प्लेस करें. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ काइंड ऑफ डीमेरिट. ओके. देन when the elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. तो जब एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में जब पुट फोर्थ किए उसने, तब जो राइज हुआ एटॉमिक मासेस में वो क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब उधर कुछ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस था.
So it was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between the two heavy element. तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, डिफिकल्टी हो गई टू फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द टू हैवी एलिमेंट. तो जो टू हैवी एलिमेंट है उसके बीच में कौन से एलिमेंट डाले, इसका जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया. सो दैट इज अ डीमेरिट. देन द फोर्थ इज पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. Okay, hydrogen shows similarity with halogens, that is group 7. Okay, hydrogen shows similarity with what? Hydrogen shows similarity with halogen, that is group 7. Yes, so हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? Demerits. Group 7. For example, the molecular formula of hydrogen is H2, you all know that. While the molecular formula of fluorine and chlorine is क्या? Fluorine का क्या है? F2 and chlorine का क्या है? Cl2. Yes, respectively. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and the alkali metal of, that is group 1. तो हाइड्रोजन जो है वो किसके किसके साथ सिमिलैरिटी शोज कर रहा था? दैट इज अल्कली मेटल के साथ and also with the halogen. Here you can see hydrogen shows similarity with alkali metals also and it shows similarity with halogens also. That is, yes. Then there is a similarity in the molecular formula of the compounds of hydrogen alkali metal, that is Na, K, etc., which formed with the chlorine and oxygen. Okay, so on considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metal, that is group 1, or in the group of halogen, that is group 7. तो यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो गया कि हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करें. ठीक है, दैट इज इन द ग्रुप ऑफ, उसका करेक्ट पोजीशन क्या है? दैट इज अमंग द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल और इन द ग्रुप ऑफ हैलोजन, बिकॉज हाइड्रोजन जो था वो दोनों की तरफ से सिमिलैरिटी शो कर रहा था. सो दैट इज डिमेरिट ऑफ दिस मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है, so this is all about our today's class. So today we have learned about what Mendeleev's periodic table, its merits and demerits. Okay, so you have holiday, go through the video. If you have textbook, then please read the textbook, go through the tutorial content, do your work regularly, make sure that you are writing some kind of important points in your notebook so that you will feel very easy during the time of exams and all. Okay, God bless you, take care and study well. Thank you.